communication. We are also going to talk about effective communication, barriers to effective communication, and we are also going to talk about traditional means of communication. And then from second unit, we'll be moving towards specifically to mass communication or media communication. So talking about effective communication and barriers. Why I have written these two things together, and barriers and effective. How does this idea goes together? So the point is that we all want our communication to be effective. That is what we want, and that is why we are into the act of communication. हम communication करते ही इसलिए हैं because हम चाहते हैं कि हमारी जो एक्सचेंज हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो इफेक्टिव हो, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो उसी इंटेंशन के साथ रिसीव करी जाए जिस तरीके से हम भेजना चाहते हैं. Let's take a very simple example. You are sending up a message to your friend, and then you want that friend to understand that you are in stress, or mentally you need some kind of compassion, some kind of affinity. You want more emotional support from your friend, but your friend is not responding you like that. So somewhere the communication has failed. So we all want it. Your parents, they ask you to wake up in the morning. So what is the intention there? So that when you listen their voice, you get up. So we all want effective communication, no matter how personal, how official, how professional, how small or big it is. We all look for effective communication. So effective is more like it is integral to communication. It is in there in itself in communication. Now, what do you mean by barriers? Barrier से मतलब क्या है? Barrier हमें सब पता है. Normally we talk about fencing or boundary as barrier. Barrier is simply when you put something in between of the exchange, in between of the journey, in between of the road, so that the movement is interrupted. किसी भी तरह का movement, vehicle का movement, आपके बातचीत का movement, या maybe if you're just sending a code to somebody through a digital network, so then the server barrier that could be there. So any barrier is something which interrupts the movement, the smooth flow. ओके एक अच्छे खासे मूवमेंट को जब कोई उसको बीच में बाधा लाता है या रोकता है तो उसे हम बैरियर बोलते हैं. एंड नाउ व्हाट आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को होने से रोकते हैं, उसमें बाधा लाते हैं? तो बहुत तरह के बैरियर्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं. We'll be talking about these barriers, but we'll also be seeing कि यहाँ पर common ground क्या है. So let's start with the very first one, which is physical barriers. Physical barriers कैसे हैं? Physical मतलब जो चीज़ ठोस है जिसको आप physically touch भी कर सकते हो. Obviously you cannot touch the space, but space in the sense जिस जगह पे आप बातचीत कर रहे हैं. अगर कॉलेज है तो यहाँ पर बिल्डिंग है, क्लासेस हैं, ऑफिस है, तो उस तरीके से space in the sense. Okay? अब बात करते हैं physical barriers की. सबसे पहले टाइम. टाइम बैरियर क्यों होता है? मान लीजिए आप किसी टॉपिक पे स्पीच दे रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं, एंड देन यू हैव 1 minute टू स्पीक, बट इफ यू हैव हैड 2 or 3 minutes तो आप और बेहतर बता सकते थे, आप ज़्यादा अच्छे पॉइंट रख सकते थे, आप एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकते थे. अगर आपकी कोई प्रपोजल की मीटिंग है और मे बी यू आर गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ इंटरव्यू और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, or maybe let's say you want to talk to your friend or maybe to your parents, but they have to go to their work और आपके पास समय बहुत कम है तो आपको जल्दी बोलना है. Sometimes because of lack of time you also get irritated and then you're not much interested in communicating or talking. तो टाइम बहुत तरीके से बैरियर बन सकता है. आप कहीं पर आपको पहुंचना था मीटिंग के लिए, आप लेट पहुंचे, वो भी एक बैरियर हो सकता है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट, बिकॉज अब आपको उतना समय नहीं मिलेगा जितना कि मिल सकता था. और कई बार लिमिटेड टाइम मिलना कोई चीज़ बोलने के लिए, बात रखने के लिए, वो भी एक टाइम बैरियर हो सकता है. स्पेस कैसे? जब दो लोग सामने बात करते हैं, अगर आप लोगों की यही क्लास अभी यहाँ
फिजिकल फॉर्म में सामने हो रही होती तो हमारा डिस्कशन और अलग तरीके से हो पाता, हम और क्लियरली डिस्कस कर पाते। कोई टेक्निकल हमारे पास बैरियर, तब टेक्निकल बैरियर नहीं होता, फिजिकल स्पेस में हम आमने सामने होते तो हम एक दूसरे के एक्सप्रेशन भी देख पाते, हम ये भी बात कर पाते कि किस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल लेके यहीं पर समझ सकते हैं, बहुत सारी और चीज़ें हो सकती थी। बट बिकॉज अब ये स्पेस हमारा फिजिकल की जगह ऑनलाइन हो गया है, वर्चुअल हो गया है, तो यहाँ पर और बैरियर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्लाइमेट भी एक बैरियर है, क्लाइमेट इसलिए बैरियर है बिकॉज वेदर कंडीशंस जो हैं वो टेक्निकल बैरियर्स को भी क्रिएट करता है, और बहुत बार आप उसकी वजह से कहीं पर पहुंचने में भी लेट होते हैं, कहीं पर डिस्टर्बेंस भी होती है। इफ़ इट्स thundering or it's raining very heavily, then you might have noise also, उसकी वजह से शोर भी हो सकता है। आपके जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे फ़ोन की हो चाहे नेट की हो, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो क्लाइमेट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम, इट मे ऑल्सो become an issue in you reaching somewhere and communicating what you want. If you were about to have an open public communication with somebody, आपकी कोई रैली या कुछ होने वाली थी and suddenly it starts raining, then also it is a problem. So climate is also a barrier. Then distance. डिस्टेंस इन व्हाट सेंस? डिस्टेंस इन सेंस कि फिजिकल डिस्टेंस किस तरीके से है। आप जब बात करते हैं रिलेशनशिप की, हम लोग बात करते हैं इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल या फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो व्हेन यू गो एंड मीट योर फादर, मे बी यू विल हग योर फादर एंड यू विल एक्सप्लेन what emotional problem you have, and he will just understand with very less words from you, he will still understand. But when you have to talk to your boss, you cannot do that, you have to maintain that physical formal distance. So बहुत सारी तरीके से distance is also a barrier, because ये formal distance होता है तो वो emotional compassion कभी नहीं आ पाता, और emotional bonding उतनी अच्छी नहीं हो पाती until unless informally आप लोग बहुत close हो, and then you can have a better conversation. एंड नॉइज इज डेफिनेटली, नॉइज इज देयर, नॉइज किसी भी तरह की हो सकती है। आप किसी से बात कर रहे हो, सडनली somebody blows a horn, and then what you said that the person couldn't hear, and then you are sitting and watching TV, and there is some other function going on in your neighborhood, and then you're not able to hear properly. So noise could be of a lot many ways or types, फिजिकल भी हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। बट फिजिकल के साथ नॉइज इसलिए लिखा है बिकॉज इन वेरी जनरल सेंस जो साउंड नॉइज जो होती है वो फिजिकल स्पेस में ही आपको समझ में आती है। देन कमिंग टू दीज थ्री बैरियर्स, इनको मैंने एक कैटेगरी में रखा है, बीइंग एक्सपोज्ड आई हैव रिटन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग एक्सपोज्ड? बीइंग एक्सपोज्ड का मतलब ये है कि ये जो बैरियर्स हैं ये culturally, socially, how we humans are exposed to certain things, उस पे डिपेंड करता है। आप वही लैंग्वेज सीखते हैं जिसको कि आप बचपन से जिस लैंग्वेज में आप एक्सपोज है, यू नो, द लैंग्वेज इज विच इज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, द लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ योर रीजन, सो यू आर एक्सपोज टू दैट लैंग्वेज, आप वो नेचुरली सीख जाते हो। हिंदी सीखने के लिए यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल, हिंदी यू जस्ट लर्न, स्पेशली वर्बल, ओरली। ओरल लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यू लर्न इट फ्रॉम योर सोशल एंड फैमिली एनवायरमेंट। सो इट इज अबाउट बीइंग एक्सपोज टू दैट थिंग। आप जिस लैंग्वेज को एक्सपोज होते हो, डायलेक्ट को एक्सपोज होते हो, आप अपने आप वो लैंग्वेज सीख जाते हो। कल्चरल बैरियर्स, आप जब एक पर्टिकुलर कल्चर के लोगों से बात कर रहे हैं तो वो जिन चीज़ों को कल्चरली समझते हैं, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, इफ़ यू आर नॉट एक्सपोज टू दैट काइंड ऑफ कल्चर, तो आपके बीच में अपने आप एक कल्चरल बैरियर आ जाएगा। For example, let's say somebody is coming from some Western country and he or she is not aware what kind of attire to wear when you are going to a religious Hindu temple. तो आपके लिए वो एक बैरियर बन सकता है, या वो आप उनके टीका लगाना चाह रहे हैं पूजा करते हुए and they don't know how to respond. Maybe they are just standing too far from you. तो इस तरह के बैरियर्स हो सकते हैं। और आप कुछ उन्हें कहना चाह रहे हैं कि प्रसाद लीजिए, दे डोंट नो हाउ टू टेक प्रसाद। फॉर एग्जांपल, जो लोग कभी गुरुद्वारे नहीं गए हैं, उन्हें नहीं पता है कि लंगर में जब बैठे हों तो प्रसाद आपको कैसे लेना है। सो दैट कुड बी अ बैरियर, यू आर नॉट अवेयर दैट यू हैव टू कवर योर हेड, that could also be a barrier. Maybe from their point, from that point you get into argument or conflict, और आप
फिर कम्युनिकेट कर ही नहीं पाए. सो कल्चर बैरियर्स कुड बी देयर. कल्चर बैरियर्स आर ऑल्सो देयर इन टर्म्स ऑफ हाउ यू ग्रेस्प द मीनिंग पे भी इसका असर पड़ता है. एंड दैट इज स्टडीड अंडर सिमेंटिक बैरियर्स. सिमेंटिक बैरियर्स मतलब है जब हम शब्दों के मीनिंग की बात कर रहे हैं. मीनिंग से मतलब एक डेनोटेटिव मीनिंग होता है, एक कॉनोटेटिव मीनिंग होता है. डेनोटेटिव मीनिंग इज द मीनिंग दैट इज देयर इन द डिक्शनरी. डिक्शनरी में जो मीनिंग है, व्हेन यू से द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड गॉड, तो एक ही आएगा, द सुप्रीम पावर और मे बी द अल्टीमेट पावर, द हेड ऑफ द क्रिएशन, समथिंग लाइक दैट. बट व्हेन इट कम्स टू connotative meaning of God, it is used in very different terms. Sometimes you will say oh my god, or you are like god forbid. बहुत अलग अलग तरीके से आप यूज करते हैं. इससे भी अलग तरीके से स्लैंग्स में भी कई बार आप यूज कर लेते हैं. सो वन वर्ड कैन हैव वन टिपिकल डिक्शनरी मीनिंग, बट इट कैन सर्टनली हैव डिफरेंट कॉनोटेटिव मीनिंग. पहले हम लोग जब बात करते थे हिंदी लैंग्वेज में, तो नॉर्मली आप लोग लिखते थे पेरेंट्स के लिए माँ एंड डैश एंड बाप. बट टुडे व्हेन यू से द वर्ड बाप, it is taken as abusive because it has been used constantly in abusive way while kind of cursing somebody. एक तरीके से abuse करते हुए the word बाप is used so much till now कि अब आप माँ बाप नहीं लिख सकते, आपको माता पिता लिखना पड़ता है या पापा लिखना पड़ता है. बट बाप इतना easily नहीं लिखा जाता है क्योंकि उसका कॉनोटेटिव मीनिंग जो है वो काफ़ी बदल गया है. ऐसे और बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे लेटिन टर्म्स हैं, जैसे कि अगर आप शेक्सपियर के टाइम की क्लासिक्स देखेंगे तो वहाँ पर प्लीज की जगह प्रे यूज करा जाता था. बट दोज वर्ड्स आर नॉट इन फैशन टुडे. तो वो वर्ड्स चले गए हैं, अब उनका कॉनोटेटिव मीनिंग भी बदल गया है. डेनोटेटिव मीनिंग इज स्टिल द सेम बट कॉनोटेटिव मीनिंग हैज चेंज, सो दे आर नॉट इन यूज. और अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है, यू आर टू मच इनटू क्लासिक्स, आप उसी तरीके से बात कर रहे हैं, so that could be a problem for your communication. Then you come to technical barriers. Technical barrier is because of two reasons. One is because the technology that you have used is not too you could say too convenient for the people टू whom you are addressing. आपने आपने अगर ऑनलाइन क्लासेस आप कर रहे हैं, जिनके साथ आप करने वाले क्लासेस उनके पास स्मार्टफोन नहीं है और मे बी ईयरफोन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, दिस कुड बी एन इशू. Maybe you want to use a certain software for your communication, but that is economically not possible for you because that software is too costly. तो टेक्निकल बैरियर्स भी हो सकते हैं बहुत तरीके से. आपके पास वाईफाई है बट कनेक्टिविटी नहीं है, वाईफाई आपके पास हॉटस्पॉट या इस तरीके से ओपन है बट यू डोंट नो द पासवर्ड, सिग्नल नहीं है, वायर में कोई दिक्कत आ गई है. अगर आप नॉर्मल टेक्निकल एरर्स की बात कर रहे हैं, कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं, बैटरी नहीं है, उसके मेमोरी कार्ड में कोई दिक्कत आ गई है, लेंस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके चार्जर में कोई दिक्कत है, कनेक्शन नहीं है, करंट नहीं है, वो चार्ज नहीं है. सो दीज आर द दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्निकल बैरियर्स. आप कोई पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं, योर लाउड स्पीकर इज नॉट वर्किंग, यू आर स्पीकिंग बट देन हाउ फार योर वॉइस विल गो, तो वहाँ पर आपको लाउड स्पीकर की जरूरत है, दैट इज नॉट वर्किंग फॉर यू. सो दीज आर वेरी सिंपल टेक्निकल बैरियर्स दैट वी ऑल नो. We wish to send message very instantly, but sometimes the message doesn't go because network is not there. And sometimes you are speaking but I am not able to hear, I am speaking and you're not able to hear because of connectivity issue. So these are technical barriers which are there. And then last one, which is emotional or psychological barriers. ये जो बैरियर्स हैं ये इंडिविजुअल होते हैं, आप इन बैरियर्स को इंडिविजुअली रखते हैं. ऑल दो साइकोलॉजिकल पार्ट जो है वो कल्चरल साइकोलॉजी में भी आ सकता है और वहाँ पर वो ग्रुप साइकोलॉजी, कलेक्टिव साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी का हिस्सा बनता है, बट दैट यू विल स्टिल पुट इनटू कल्चरल बैरियर्स. जब हम साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर्स की बात कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के तरफ से जो बैरियर्स हो सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल somebody is talking to you or telling you a joke, but because you are in a different mood, maybe you are in a sad mood or maybe you are tensed about the test you have tomorrow or today, so you are not paying attention and you don't feel like laughing.
You don't feel like that that kind of humorous content is reaching up to your mind and making you laugh, making you happy about something. And maybe you are too happy, and then you're not realizing that the friend who is sitting next to you has some kind of problem, some kind of issue, some kind of stress. So this is one emotional barrier that you have. Then you have attitude problem. Sometimes there are people, those who have certain kind of attitude issues, where you are not on the same plane and you cannot have a proper conversation. This is not to say that somebody has a bad attitude. A term like bad attitude doesn't fit here. The idea is that two people, those who are talking, or two maybe two groups, or three or four people, those who are talking, they are not on the same mental plane, they are not on the same attitude plane, and they are not able to reach to a common ground and talk about it. So these could be psychological barriers. इस तरह के barriers psychological हो सकते हैं. जरूरी नहीं है क्या आप बोले कि एक इंसान सही और दूसरा गलत है. Simply because people, they are different. Every individual is very different, because we, no matter, even if we belong to same family, we belong to same religion, we belong to same country, and maybe sometimes the same school or university or college and group class, but still, as an individual, we have our own experience. When we see rain, we feel different. When we watch a film, we experience it on our own individually. When we talk to somebody, we create a sentence and we tell that thing. So all these experiences are very individual, and because of this individual experiences, the way you look at your parents, the way you see siblings, the way you see society, your neighborhood, the way you see your friends, the way you relate to them, this is very individual. And because of this, you might have psychological barriers when you communicate. So these are the barriers that are there in communication, and these barriers can be there in terms of existing individually, and could also exist collectively. You may have psychological barrier, and you may also have technical barrier, which will create even bigger problem for your communication. You may have cultural barrier, and you may also have physical barrier. So then this will create even bigger problem for communication. And sometimes all of these things are quite in sync, and then you are able to have a better communication, much more effective communication. अब इसके अलावा अगर आप कहीं और पढ़ते हैं बैरियर्स, तो आपको और बहुत सारी तरह से डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन मिल सकता है, डिस्क्राइब करे हुए मिल सकते हैं. जैसे कि सिमेंटिक्स में जो जब हम लैंग्वेज और वर्ड्स को लेके डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ पर होमोग्राफ्स और होमोनिम्स, इस तरह के वर्ड्स भी मिलते हैं. बट उसका मतलब है कि आपको लैंग्वेज में बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, और उतना ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज को स्टडी करना, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग हेयर लैंग्वेज स्पेसिफिकली, वी आर नॉट लिंग्विस्टिक्स, वी आर people those who are studying communication. So for us, we need to understand all of these things with regard to communication. तो उतना डिटेल में जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. कल्चरल बैरियर्स में भी आप बात कर सकते हो, एथनिक्स की आप बात कर सकते हो, रीजनल इश्यूज की आप बात कर सकते हो, और बहुत सारे तरीके से कल्चर की मल्टी कल्चर आइडियाज़ हो सकते हैं, क्रॉस कल्चर आइडियाज़ हो सकते हैं, इंटर कल्चर आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में हमारे को जाने की ज़रूरत नहीं है. Simple understanding of these barriers is enough for us to understand how we can improve our communication. यहाँ ये जो barriers की हम बात कर रहे हैं, इनकी simple understanding भी हमारे लिए बहुत है ये समझने के लिए कि हम अपने communication को कैसे better करें. Let's just take it once again. अगर आप physical barriers की बात कर रहे हैं, if you are talking about mass communication, obviously आप जो डिस्टेंस है हम नहीं कर सकते. इफ़ यू आर मेकिंग अ फिल्म एंड यू हैव टू रिलीज इट नेशनली और इंटरनेशनली, तो आप वहाँ पर अपनी फिल्म के बारे में खुद जाके नहीं बोल सकते. तो आप इसको कैसे कैसे कवर अप करते हैं? यू गो फॉर पब्लिसिटी, यू गो फॉर मार्केटिंग, you go and talk to people before you are releasing it, so that you are bridging the gap, you are bridging the distance between you and the audience. So this is how you try to improve the barriers when it comes to communication.
climate problem है, then you may reschedule your public gathering. If this is a problem, then you can choose a technology which is not much affected by climate. For example, प्रिंट टेक्नोलॉजी, प्रिंट मीडिया पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है क्लाइमेट का। टाइम की आप बात कर रहे हैं, अगर टाइम आपके पास कम अवेलेबल है ना, यू हैव टू मेक एन एड फॉर ओनली 15 seconds, then you have to be more creative. This is the only way to sort out the problem of time. You have to be more intelligent, you have to be more creative. Linguistic barriers, you have to know for sure which language is in use for your target audience. आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो किस लैंग्वेज को प्रेफर करती है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। और आप ये अगर समझते हैं तो आपका लिंग्विस्टिक बैरियर बहुत हद तक कवर अप हो जाता है। कल्चर बैरियर, व्हेन इट कम्स टू थिंग्स विच आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसमिनेटेड, यानी कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन अपने मैसेज का नेशनल लेवल पे कर रहे हो तो आपको कल्चर बैरियर्स जो है उन्हें कलेक्टिवली देखना होगा। यानी कि एक नेशन के लिए किस तरह के कल्चर आइडियाज जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, अनएक्सेप्टेबल हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जब ये रीजन में आ जाता है, यू नो फॉर एग्जांपल यू वांट टू रिलीज योर फिल्म जस्ट इन नॉर्थ ईस्ट, तो आपको वहाँ के स्पेसिफिक कल्चर अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा। बट इफ़ यू वांट टू रिलीज इट नेशनली, तो आपको इंडिया के एक बहुत ही कॉमन ग्राउंड को लेना पड़ेगा जहाँ पर आप उसके कल्चर बैरियर्स को, एक्सेप्टेंस को और अनएक्सेप्टेंस को समझो। सिमेंटिक बैरियर जो हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन में बहुत ही कम हो जाते हैं, बिकॉज विजुअल्स के डेनोटेटिव मीनिंग फिक्स नहीं होते। आप ऐसा फिक्स नहीं कर सकते कि एक विजुअल का यही डेनोटेटिव मीनिंग है, बट कॉनोटेटिव मीनिंग जो है विजुअल्स के कितने भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पर सिमेंटिक बैरियर्स उतने ज़्यादा अप्लाई नहीं होते, बट स्टिल आप ये कोशिश कर सकते हो कि आप ऐसे विजुअल्स का यूज़ नहीं करो जो कि सोसाइटी में या उस कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। Then technical barriers, you have to know your technology well, and you also have to know which technology is friendly for your audience. आपकी audience भी किस technology को easily access कर सकती है, use कर सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। You might be using some kind of digital platform, but your audience is only available on TV. Your audience has access only to TV, तो वहाँ पर टेक्निकल बैरियर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस आपको किधर मिलने वाली है। इट विल बी मोर इजीली एक्सेसिबल थ्रू टीवी, थ्रू डिजिटल नेटवर्क्स, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, थ्रू ट्विटर और थ्रू प्रिंट, थ्रू रेडियो। किस तरीके से आप अपना मैसेज ईजिली पहुंचा सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे दिल्ली के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो दिल्ली में रेडियो इज़ वेरी मच इफेक्टिव, स्पेशली जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं, बहुत अच्छा उनका नेटवर्क है, बहुत अच्छी उनकी रीच है। तो वहाँ पर रेडियो इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी टू यूज़, गुड चैनल टू यूज़, बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा और पार्ट्स में भी हो। Then emotional and psychological barriers. Now when it comes to mass communication, ये emotional psychological barriers जो हैं ये बहुत ही difficult हो जाते हैं समझने। आपको नहीं पता है कि कोई अपने घर में अगर आपका प्रोग्राम देख रहा है, फिल्म देख रहा है, आपका न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो वो किस मूड से पढ़ रहा है, किस एटीट्यूड के साथ पढ़ रहा है, उसका इमोशनल स्टेट क्या है, मेंटल स्टेट क्या है। बट when it comes to making the content of your communication, तब आप उस इमोशनल नीड को समझ सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड योर इमोशनल नीड कलेक्टिवली। आप समझ सकते हो कि अगर आईपीएल मैचेस चल रहे हैं तो किस तरह की इमोशनल नीड होगी इंडियन ऑडियंस की। यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू डू नॉट हैव any kind of cricket match going on which is very close to Indian hearts, and you don't have any big film that is going to release, so this could be a good time to release your new or start your new TV serial. People will be more open to see something which is new. तो इस तरीके से आप अगर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, कलेक्टिवली भी समझते हैं, तो मास कम्युनिकेशन में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इन जब हम ग्रुप कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं, वहाँ पर इमोशनल नीड समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जब आप ग्रुप कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो तो टेक्निकल बैरियर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इमोशनल बैरियर्स ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इफ योर फादर इज एंग्री, ऑब्वियसली यू विल नॉट गो एंड आस्क हिम समथिंग व्हेन ही इज or he is stressed. You will look for a time when he feels a little relaxed and then you can talk to him.
So these are the ways how you understand things. So this is all. These are barriers to effective communication for you. And when we do not have these barriers, or when we are able to limit the effect of these variables on our communication, then we have a much better communication, then we have a much more effective communication. Okay?